जी सर, जी सर, ऑन कर दिए रिकॉर्डिंग। अभी वो मैडम ने कहा स्टार्ट करो। उसके बाद वाईफाई उन्होंने कहा कि यूज़र पासवर्ड सारे बच्चों का तो लैपटॉप उसमें वो मैंने कहा दिया डोमेन 2 और आइडिया भी ऑन है। हाँ जी, 90% मैंने सिस्टम का सर वो हाँ शकील और मैं उसे दे रहा हूँ, वो कर रहा है चेंज और बशीर भी आ रहा है क्या तो 10 पे शकील मैं जाता हूँ। सजाद भी आ गया था बल्कि दोनों, तो बस मैं दोनों बशीर को आप चेक कर लीजिएगा, वो आ जाए तो 2 बजे उसने कहा था। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पहले इनफॉर्मल स्टार्ट ले लेते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पार्टिसिपेंट्स बता रहे थे, तो आई कैन सी सम familiar faces as well and some new faces, so if we can go through the room and have an introduction session. आपको तो मैं जानती हूँ जी। आई एम Founder Awaz, मैंने आपकी AI की क्लास ली थी लास्ट सेमेस्टर एंड आई एम इन माय जूनियर ईयर in computer science. Okay. So what are your expectations from this bootcamp? Well, I expect to learn the fundamentals of LLMs and the fundamental technologies of LLMs and how to use them, like fine-tuning models, technology pipeline. Okay, from SEECS? Okay, so what are your expectations? To learn the basics of cloud model that I'm making a model in this whole concept topic. Okay, so what is your research topic? Design and development of chatbot for medical. What about you? Seemab Latif from MSA. एक्सपेक्टेशन बस यही है कि LLMs को फाइन ट्यून करना सीख जाए। Are you in my NLP class as well? Yes. What about you? Seemab Latif from MSA and expectation ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्यों नहीं है? बेसिक मतलब ट्रेनिंग करनी आ जाए, फाइन ट्यून करना आ जाए। Okay. Basically, I'm doing MS from IS department, and the expectations from this lab is to just get the basic understanding of LLMs. Okay. With So IS and LLM, so what's the connection? It's just the buzzword you want to learn about, or? No, I just want to connect cybersecurity with AI and do some innovation work here. So that's why I just get the basic of this. What about yours? Shahrams Jawal, Bachelor in Accounting and Finance, or Application Design and Finance. Okay, and from which department? NBS. NBS, okay. So things will be a little bit technical as well, but don't worry, we have the expertise over here. They will guide you through the process.
But the good thing is that initially you will have the understanding what sort of data we require for LLMs and how to prepare that data, and then later on how can we use it for LLMs. So it's going to be technical, but it is going to be a good informative session for you. My name is Pyanan, but I'm a student of MS Data Science. Okay. And expectation ये है कि डॉक्यूमेंट मॉडल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना किस तरह, और इसके अलावा फाइनेंस के हवाले से भी कि फाइनेंस के अलावा भी किस सेक्टर को लेके इसको क्यों फाइन ट्यून कर सकते हैं. जी Fatma. Yes, what are your expectations from this? I'm basically looking forward to get myself introduced with LLMs and how to fine tune them. Okay, so it is your research topic. Research topic, yeah. Okay. So we have my RAs, my power, they are here. So Huma, she is doing research in different generative models, especially speech ko leke or text ko bhi leke. So she is going to be your resource person for fine-tuning LLMs. Then we have Saha Arshad. She is my PhD student. She is specifically working in the finance domain, financial data case preparation, LLMs ko use karke hum kaise karenge. She will go through that use case. Nikhar is also my research student. ये ज़्यादातर उर्दू लैंग्वेज पे इन्होंने काम किया, but अब इन्होंने इस particular workshop के लिए she will tell you how to use the RAG-based model for LLMs. तो इसके ऊपर ये काम हम करेंगे. Basically question answering task के लिए, chatbots के लिए. Zoya is my also PhD student. Although she is not part of the workshop training के perspective से, but again she is working on Urdu text और उसके different sentiment analysis के ऊपर एक बहुत deeper level के ऊपर जाके काम करनी है, which is opinion mining. She is not my research student, but she is our PhD graduate. Dr. Sohail के साथ ही काम कर रही है on Urdu ChatGPT और इनका उस end के ऊपर experience. तो yes, हम start करते हैं. So most of you know me, but I will give a brief introduction. So I am Dr. Seemab Latif. I have PhD in artificial intelligence, specifically in natural language processing from University of Manchester. I did my PhD in 2010. It was a long time ago. At that time, NLP was very sort of static. So people thought at that time it is not going to flourish in future, but nobody knows it. So अभी आपने देखा कि पिछले 2-3 साल के अंदर, especially after deep learning 2016 के बाद से NLP के काफी काम होना शुरू हुआ, and we end up in these large language models. ज़्यादातर मेरा काम जो है वो NLP के अंदर ही है, English, Urdu और ज़्यादातर फाइनेंस को लेके और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर भी हम काम करते हैं. सो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को मेरा स्टार्टअप भी है. हम स्टार्टअप के अंदर भी अपने LLMs को यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने अभी इलेक्ट्रिक के साथ भी DNNs का बूट कैंप कराया है, और वी आर प्लानिंग आवर सेकंड हैंड्स ऑन बूट कैंप ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल. इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डीप बूट कैंप जो कि हमारा इंशाल्लाह अप्रैल में स्टार्ट होगा. कुछ बैठ जाता है. आप प्लीज आगे आते हैं, यहाँ पे भी किताब है, ये भी है. इधर आके आते हैं, यहाँ पे है. So before that we have a brief round of introduction. If you guys can introduce yourself. I'm Ikra, and I came from Backstreet Technologies, and I'm an AI developer. Okay, good. Okay. I'm Samya, and I'm an AI developer working at Backscare Technologies. Okay. My name is Ghulam Mohammed. I am my junior AI engineer at Backscare Technologies. Abdulahad, also AI developer at Backscare Technologies. Are you from SEECS? Yes. Yes. You taught. Yes. Okay.
So हम लोगों ने भी start नहीं किया था, we were waiting कि हमारे participants पूरे हो जाए, तो we can start formally. So we welcome. During this particular 3 days workshop, we are going to cover basics of LLMs, and our focus will be towards some use cases of LLMs with respect to finance, और हम उसी के ऊपर अपना confined focus रखेंगे. Otherwise, LLM is a very broader field, और हम इसमें बड़े easily dive कर सकते हैं. We will try to make it as hands-on as possible and as informative as possible for you guys. Okay, so I will give a brief introduction about LLMs, its usage and everything, and then I will hand over to Sahar. She is going to take you along with the development of a data set for finance, and then we will be using LLMs for this particular data. So LLMs is the next frontier of AI. We can give any sort of data to it, whether it's text, images, speech, structured data, signals, anything you can give to LLM, and then you can use that information for any particular task. Okay. Just to give you an example, what sort of LLMs, what is the capability of LLM? We are using brain signals, EEG signals, to translate. We are using EEG signals as an input to the LLM, and LLM is converting those signals to text. So basically, the whole end-to-end product is thinking to text. So LLM has that capability. The only thing you require is to transform your problem in a way that it can be solved using LLM. So what is an LLM? LLM stands for large language model. So what is a language model in general? So language model is a program that can generate a text for you, or that can perform any processing on the text, and you can use that processing to generate the text. So given a context word, we produce the next word. So this is the next word prediction language model, in which the cow went to the dash. So we have to fill in the blank using our language model. And it is not going to give us just one word, it is going to give us the probabilities of words that can come over here. The highest the probability of a word, the most probable fill in the blank word it is. So over here, the highest probability word is field. So that means if we fill this blank with the word field, we are going to get a complete sentence out. Okay? Rest of the words, they have low probability, so it gives us the probability distribution for the suitable words that we can use. So model is trained to accomplish the task, this particular task, and how can we train that model? We need a huge amount of data, and we train our language models on those data. So language models are not new, they are very old. Initially, there were handcrafted rules language models, there were statistical based language models, and now we have these language models, which are LLMs and GPTs, commonly both them. Before LLMs, we had to do all of these NLP tasks, which were there, जो हम लोगों को individually करने पड़ते थे. Okay? जैसे parts of speech tagging हो गई, statistical tagging हो गई, name entity recognition, question type detection, paraphrase resolution, answer extraction. So if this is the text that is given to me and I have to answer these 5 set of questions, so I have to first understand this text. So before large language models, what we have to do, we used to perform POS tagging on it, name entity recognition करें, sentences को हम understand कर रहे हैं, question की type को detect करें, whether it's a factual question, descriptive question, what sort of question it is, and then we reply to that particular question. So ये सारे task हमें series में sequence में perform करने पड़ते हैं. For example, after reading this text, who gave books to the new library? The answer was Thomas Jefferson. So हमें ये सारा कुछ करने के बाद एक answer receive हुआ. But with large language models, we don't need to do all of these questions. Okay? All of those tasks.
what we need to do is, we just need to apply a large language model and we can accomplish all of those tasks. So आपके पास अब given this text, कोई भी आप उससे question पूछ ले, it is going to give you answer because it has understood that particular text. Even अब आप उसको summarize करने को बोलेंगे या कुछ इसमें से और factual information extract करने को बोलेंगे, it will be able to do that. So LLMs, they are journal. One model can perform multiple tasks. They are broad in knowledge because they are trained on a huge amount of data. Okay, जितना भी आपका web के ऊपर data available है, books का data available है. So these language models, they are trained on a huge amount of knowledge, and they are accessible. That means no, you don't need to code actually to talk to them. If you have a language model, for example, ChatGPT को use करने के लिए, you don't need to code it. You just need to interact with it with using simple language. Even आपको पता है ChatGPT where you can use any other language. By the way, जब ChatGPT आया था, तो उस वक्त जो ये लोग बना रहे थे OpenAI वाले, उनको खुद भी नहीं पता था कि ये multilingual है. They discovered it by accident that कि ये multilingual है, because their focus was on English and they were testing it on English language, and then accidentally they discovered that it is trained on the other languages as well. तो वो उसका focus उस तरफ नहीं था, so which makes it broader. क्योंकि इंटरनेट के ऊपर हमारे पास हर लैंग्वेज में डेटा अवेलेबल है, so उन्होंने इस तरह से उसने वो टास्क डिजाइन कर दिया था. So these are some of the tasks that we can perform using LLM. Summarization, give them multiple documents, it will summarize you, it will summarize it for you. Information extraction, जितनी मर्जी बड़ी आप उसको comprehension के लिए दे दें, text दे दें, file दे दें, it will read it, और आप उसमें से फिर different questions पूछ सकते हैं उसको and it will answer it. Document understanding, आप उसको document दे दें, then ask about different sentiments on it, उस document की base के ऊपर आप insights extract करा सकते हैं. So this is something we can do for the financial data के ऊपर. Text generation, जिस तरह से हम अपने GPT से text generate करवा रहे होते हैं, आपने से कोई poetry generate करवाई है, कोई आपने story generate कराई है, given certain prompts, so आप इसमें से सारा कुछ कर सकते हैं. Although poetry writing या style transfer के ऊपर थोड़े से legal standpoints हैं हमारे पास, क्योंकि इस पे काफ़ी लोगों ने copyright issues फाइल कर दिए हुए थे कि लोगों ने इस तरह से करना शुरू कर दिया कि उसको एक writer की एक poet की poetry दे के और कहा कि इस style के अंदर poetry generate कर दो. So that was some sort of copyright issues बनना शुरू हो गए हमारे पास कि you cannot steal someone's writing style or someone's poetry style. Then code generation, everyone knows that now we can use certain code generators, और बहुत सारे हमारे पास अब इसकी practical applications भी available हैं and people are using them for generating code. This is a lot of text, I'm not going to go through it, but I will share it with you guys. So business factors in choosing an LLM. How can we choose an LLM? What are the factors that we need to consider while choosing any LLM? First one is the model performance and fit. How good is the model? आपकी problem domain के साथ जो problem solve करने जा रहे हैं उसके साथ उसकी कितनी alignment है? That is the first thing that you need to consider. Then customizability and fine tune. How can you customize that particular LLM? How easy it is for you to fine tune it on your own data or on the custom data. Ethical and responsible AI. उसके अंदर LLM के अंदर biasness तो नहीं है, fair है कि नहीं है. आपके पास guardrails का एक बहुत बड़ा issue आता है कि वो कभी भी कोई ऐसी information ना generate कर रहा हो which is not right. ठीक है? अगर आप इसे ChatGPT के अंदर लिखें, I should not be speaking those words. जैसे अगर आप उससे कोई ऐसा काम करने को देते which is ethically not right, it is not going to respond to you on that. ChatGPT कभी भी आपको कोई recommendation नहीं देता. अगर आप उससे किसी चीज़ के बारे में पूछे, it will tell you the pros and cons of it. It will not direct you towards a certain task. So these are the ethical and responsible considerations जो कि हम guardrails के through भी control करते हैं. Every LLM is being
evaluated by a third party, उसको आपने लाजमी देखना होता है कि उसकी वेरिफिकेशन, उसकी वैल्यूएशन जो है वो थर्ड पार्टी से हुई भी हो. डीबगिंग उसकी कितनी आसान है, इफ़ यू आर फाइन ट्यूनिंग इट, आप उसको कितने बेहतर तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं. सो यू नीड टू हैव फुल ट्रस्ट ऑन दी LLM दैट यू आर चूजिंग. Cost and scalability, obviously these things do not come for free. आपके पास although कुछ free versions available हैं, but you have to look into it. अगर आप उसको किसी practical उसमें deploy कर रहे हैं situation के अंदर, तो you have to look into its scalability and cost issues. And security and privacy, of course, जैसे अब ChatGPT की हम use करते हैं API, तो वो आपको बड़ा clearly बोलती है कि all the data that you are going to upload, it's going to be part of the ChatGPT, और वो फिर आगे लेकर उसको ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. तो हमने we have to make sure कि हम इसको इसमें कोई हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई सिक्योर इंफॉर्मेशन न डाल रहे हैं. This one is very important slide in a sense that gives us on which type of data it is trained on. Different LLMs जो है वो किन डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल Falcon is trained purely on web pages. So it has 40 million of data जिसके ऊपर इसको ट्रेन किया गया. This is Alpaca code. It is only trained on the code. So these are different ratios with respect to the type of data on which different language models has been trained on. So इसलिए जब when you are making a choice, तो आपको सबसे पहले अपना यूज केस देखना है और फिर उसके हिसाब से सेलेक्ट योर LLM. Okay, so there are other technical. पहले हम लोगों ने देखे थे यूज केस के perspective से LLMs. Now from the technical perspective, number of parameters. Obviously हम कभी भी किसी भी LLM की बात करते हैं तो पहले first thing that comes to our mind, what is the number of parameters, what is the size of the LLM. So parameters are the weights जो कि हम उसके fine tune कर लेते हैं. So larger the weight, the maximum amount of उतना ज़्यादा size उसका बड़ा होगा. जितने weights उसके ज़्यादा होंगे उसकी उतनी accuracy बेहतर होगी. It will take more time to fine tune, but the accuracy is going to be better. जितना आपके language model का size छोटा होगा, वो easy तो होगा. आपके पास उसको एक normal machine के ऊपर run करना आसान होगा. बट उसकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है. साइज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विंडो, कि आपके पास वो कितना बड़ा प्रॉम्प्ट ले सक रहा है और वो कितना आउटपुट जनरेट कर सकता है. उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है. ट्रेनिंग टाइप सेल्फ सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग है इसकी, सेमी सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है. विच सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग इट इज वर्किंग ऑन. इन्फ्रेंस स्पीड क्या होती है कि जब आपने ChatGPT को एक क्यूरी दी और उसने उसका आंसर जनरेट किया, सो हाउ मच टाइम इट हैज टेकन टू जनरेट द आंसर. तो आउटपुट रिसीव करने का जो टाइम है, इन्फ्रेंस स्पीड वो आ जाती है. अगेन कॉस्ट है, फाइन ट्यून करना कितना ईजी है, इज डेटा सिक्योर. आपका डेटा अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं लीव कर सकता, स्पेशली इन फाइनेंस परस्पेक्टिव, डेटा की सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जो यहाँ पे फाइनेंस की साइड से जो लोग आए हुए हैं, तो आपके पास जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या जो फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इट शुड नॉट लीव द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. जैसे अगर हम लोग किसी बैंक के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा है वो पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना चाहिए. सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हमारा डेटा एक्चुअली कहाँ पे रिजाइड कर रहा है. So this is from finance perspective, this is something very important. So we have two types of models, discriminative and generative. So discriminative models are those जो कि आपके टेक्स्ट को रीड करके उसको उसके ऊपर एक आपको आउटपुट दे देते हैं. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, whether this text belongs to the finance domain or not. Yes, no classification, एक लेबल असाइन है. Name entity recognition, आपने okay, you have to identify all the organizations given in that particular text. So एक लेबल असाइन हो रहा है. If you have sentiment analysis, तो ये आपके टेक्स्ट को discriminate कर रही होती है into different labels. So जो दूसरे हैं generative, in this particular type of model, you are actually generating the text. ठीक है, आपने जैसे story generate की या narrative generate किया, so आपका जो model है वो text generate करके दिया है. So these are two types of models. और जो हमारे पास LLMs हैं, they are more like generative models.
the thinking behind LLMs, that was the generative model. Okay, so this slide is very important, which will tell you that you guys are doing something which is still work in progress. It is not something इसके ऊपर बहुत ज़्यादा research होगी है, already saturated हो गई चीज़ें. So it is industry-wise maturity of AI. या LLMs की आप बात करें 2021 से 2024 तक. So banking and capital markets की जो हमारे पास maturity है, वो भी बहुत initial levels के ऊपर. तो अगर आप अभी अपने इसके ऊपर research करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई products लेकर आते हैं, तो there is a lot of room to innovate. Okay, जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए tech industry के अंदर बहुत ज़्यादा advancement हो गई है. Automotive, life sciences, everything. Insurance is again थोड़ी सी finance से related चीज़ें आ जाती हैं. इसमें इतना काम नहीं हुआ हुआ. Banking and this one, public service में भी काम हो रहा है, but still आपके पास जो banking और finance वाली side है, capital markets वाली side है, ये इसमें there is a huge room for improvement. So यहाँ पे I will stop and I will request Sahar Rashid. She will start her session, which is more on hands-on. आप लोगों के साथ में शेयर करती है गूगल स्लाइड, लेकिन सो उसमें आप लोगों को डेटा और वो सारी चीज़ों पे अच्छी बन जाएगी. तो अब आप लोग अपना hands-on काम शुरू करेंगे. If there are any questions, please let me know. No questions? आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ ईमेल पे शेयर हो गया ये वाला फाइल, ये वाला आप लोगों के पास ईमेल आपको भेज वो ड्राइव की डायरेक्टली शेयर की हुई है, ठीक है, उसकी आपको ईमेल आएगी नोटिफिकेशन. बस ये हो जाएगी. Space vacant on the front. मिल गया फोल्डर तो जिसको नहीं मिला, ठीक है, ये फोल्डर आप लोगों ने एक्सेस करना है ड्राइव पे और इसमें डेटा की तरीके से फोल्डर को निकालना है. सारी थोड़ा सा जूम इन हो सकता है क्या? वैसे अपनी कॉपीज तो हैं सबके. अच्छा ठीक है. मैंने इस मामले में इंट्रोडक्शन तो थोड़ा दे दिया. I'm doing PhD specifically in the finance domain related to the stock market. इसमें NLP और generative AI को यूटिलाइज करके हम लोग स्टॉक मार्केट की रिकमेंडेशन पे, ट्रेडिंग रिकमेंडेशन पे काम करें. We have chosen this use case क्योंकि इस पर थोड़ी सी हमारी ग्रिप भी है और डेटा भी हमारे पास अवेलेबल था, तो that would be easy to communicate and deliver to you guys. स्टॉक मार्केट और उसकी फंक्शनिंग से कितने लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या आइडिया है या क्रिप्टो के एंड पे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, अदरवाइज थोड़ा सा आप लोग गुड. तो यू गाइस कैन correct me if I'm lagging somewhere, और दूसरों के लिए फिर I have to take from the very basic concepts, right? तो इस तरह हमने नोटबुक को ब्रेक की. अगर हम इस एस्पेक्ट को देखें रिगार्डिंग द ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, क्या है उसको किस तरह से हम वन बाय वन देखें. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक बड़ा लाइफ अचीविंग गोल होता है, स्पेशली अगर हम अपने फ्यूचर को देखें. वेस्टर्न लाइफ स्टाइल में maturity age तक they are expecting so much saving to do their task के वक्त अपने कोई
ग्रेजुटी लेते हैं अपनी सैलरी के थ्रू इसको राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? सो व्हाट एवेन्यूज आर अवेलेबल टू अटेन दोज लॉन्ग टर्म गेन्स इन फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो छोटे छोटे करके आप उसमें एम्प्लॉय कर रहे हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आप चलते हो, ठीक है? ये ट्रेंड ऑब्वियसली अभी एशियन कंट्रीज में भी इन्वेस्टर्स जो है आउट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग क्रिप्टो और इस सब चीज़ में इन्वॉल्व, राइट? तो उसमें डोमेन नॉलेज होना और कहाँ पे एआई आपको एड करेगी, असिस्ट करेगी टू इक्विप यू विद फर्दर प्रोसेसिंग, तो वो वहाँ पे हम इस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को कवर करेंगे। और फिर वहाँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिहाज से हम डेटा के साथ प्रिपेयर करना है, तो ये चीज़ हम बेसिकली इसमें कवर करेंगे, ठीक है? फॉर दैट we need to understand the investment avenues that are available alternately to the stock are obviously the crypto, futures, derivatives आपने सुना होगा, saving certificates की फॉर्म में लोग पाकिस्तान में करते हैं, but everybody is interested जहाँ पे आपका रिटर्न अच्छा हो, ठीक है? सर्टिफिकेट्स की हम बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, वहाँ पे जो यील्ड है हमारा या रिटर्न है that is not more than 5 to 6%, इस रेंज में होता है। ऑन द अदर हैंड स्टॉक्स हो गए, आपके पास क्रिप्टो वगैरह की साइड हो गए, आप फ्यूचर्स की बात कर लो, ठीक है? या बाहर तो लिवरेज ट्रेडिंग भी होती है, तो वहाँ पे आपका रिटर्न क्वाइट हाई होता है। इसको अगर आप देख लो तो S&P इंडेक्स का सुना होगा आप लोगों ने, S&P 500 इंडेक्स यूएस में यूटिलाइज होता है। हमारे पास यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स है, KSE 30 इंडेक्स है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स और कंपनीज अपने स्टॉक्स अवेलेबल कर देती हैं टू द पब्लिक, ठीक है? पब्लिक वहाँ पे उन स्टॉक्स को परचेज करती है। That company needs to be publicly listed, available on the stock market and the financial market. वहाँ पे उसकी लिस्टिंग होने के बाद they list their shares, और वहाँ पे शेयर्स की जो ट्रेडिंग है in forms of buy and sell, उसकी पोटेंसी बढ़ाती है और आप वहाँ से गेन्स अटेन कर सकते हो। आपने एक कॉस्ट पे एक शेयर खरीदा है, आफ्टर सम टाइम्स अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, you can sell it and get your exit from the market. वो आपको इन फॉर्म ऑफ कैश रिटर्न हो जाती है, और यू कैन री इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट अगेन, कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो जो लोग फाइनेंस डोमेन से हैं, दे नो कि एक पोर्टफोलियो जो मेंटेन करता है इन्वेस्टर, वो मल्टीपल इक्विटीज़ पे या मल्टीपल आपकी एसेट्स पे, फाइनेंशियल एसेट्स पे करता है। नॉर्मली हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह लेके नहीं चल रहे होते, क्योंकि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? वी विल डिस्कस द रिस्क वन बाय वन एज कम्पेयर टू द सेवर जो साइड पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली डिफरेंट स्टॉक्स को परचेज करके वहाँ जहाँ से भी हमें गेन मिला, वी कैन री इन्वेस्ट इट अगेन, राइट? सो S&P 100 का ये लास्ट 3 मंथ्स का आपके सामने बना हुआ है यहाँ पे, बट यू कैन सी कि इफ समबडी हैज परचेज्ड सम स्टॉक्स इन दिस डाइवर्स पोर्टफोलियो, मल्टीपल इक्विटीज हो सकता है मैंने लियो, मल्टीपल सेक्टर्स में कर दिया, आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल के होते हैं, आपके डिफरेंट केमिकल सेक्टर्स होते हैं, उन सब की कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड होती हैं, वो सारी कंपनीज अपने शेयर्स वहाँ पे अवेलेबल कर रही होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उनके शेयर्स अप और डाउन जा रहे होते हैं, ठीक है? तो किसी ने अगर यहाँ इन्वेस्ट किया था तो लास्ट 3 मंथ्स में ही कम्स अप विद 25% प्रॉफिट, राइट? तो इतने शॉर्ट अमाउंट में 25% जितने भी शेयर्स खरीदे थे उस पर अटेन करना इज मोर देन सिक्योरिंग योर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और सेविंग सर्टिफिकेट्स। सो इस तरह से हम लोग बेसिकली इसको देखते हैं। और जो डाइवर्स पोर्टफोलियो की मैंने बात की, तो वो नॉर्मली बड़ा फेमस कोड भी है कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि आप एक फाइनेंशियल एसेट एक इक्विटी पे नहीं लेके जा रहे होते, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखते हो, मल्टीपल सेक्टर्स पे उसको एम्प्लॉय करते हो, वहाँ से आप अपनी ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? स्टॉक मार्केट चूँकि बेसिकली अभी तक मार्केट का जो है वो इकोनॉमिक मॉडल चल रहा था, तो बेसिकली जो चीज़ इफेक्ट करती है वो आपकी सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है? सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूटिलाइज होगा, जहाँ पे भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो स्टॉक की प्राइस आपकी कम होगी, ठीक है? तो वो चीज़ आपकी मार्केट को इफेक्ट करती है। वी हैव टू कंसीडर बीइंग अ इन्वेस्टर कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द स्टॉक मार्केट, राइट? ताकि आप उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्यून इन कर सकें, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बीइंग पॉपुलेटेड हुए थे। यहाँ पे हमने बताया, एक तो हमने बात की कि सप्लाई और डिमांड से, सप्लाई ज़्यादा है तो आपकी प्राइसेस गिरेंगी, डिमांड ज़्यादा है तो आपकी प्राइसेस आप होने के चांसेस होते हैं। एक ये फैक्टर्स हैं जो मार्केट को लेके चल रहे होते हैं। दूसरा फिर आपके पास आज भी हम कवर करेंगे दैट इज रिगार्डिंग द मार्केट इंडिकेटर्स। स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली एम्प्लॉय करते हैं ट्रेडर्स डिफरेंट इंडिकेटर्स को टू सी द बिहेवियर ऑफ द मार्केट, टू गेस द बिहेवियर ऑफ द मार्केट, ठीक है? यहाँ पे यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड